several students were injured in Delhi's Jawaharlal Nehru University after violence broke out on campus on Sunday evening. The JNU Students' Union alleged that the ABVP, which is the student wing of the BJP members, assaulted the mess secretary over serving non-vegetarian food in hostel and stopped the non-vegetarian food from being served in the Kaveri hostel. Whereas the ABVP in a statement claimed that members of left organizations tried to stop a puja from being organized in the hostel. The JNU Students' Union carried out a late-night march to the Vasant Kunj police station demanding action against the attackers. The Delhi police has registered an FIR in the case. Let's just listen in to what the students had to say. संडे के दिन में जेएनयू के हर हॉस्टल में वेज और नॉन वेज दोनों खाना बनता है। तो वेज खाना तो बन गया, लेकिन नॉन वेज खाना को वो लोग वापस भिजवा दिए, तो आधे लोगों से ज्यादा का खाना ही नहीं बना था। तो उसी समय लेटर लिखा गया कि एबीवीपी ने ऐसा किया है। मिस वार्डन को भी एक लेटर दिया गया कि आप बाकी लोगों का खाना अरेंज करवाइए, लेकिन वो खाना अरेंज नहीं करवाया गया। जब 7:30 बजे जब सारे स्टूडेंट गैदर होकर बोलने लगे कि खाना कहाँ है, तो एबीवीपी के लोग आके वहाँ भी हंगामा शुरू कर दिए कि हमारी मर्जी है, हम नहीं खाते वेज, तो आज कोई भी नॉन वेज नहीं खाएगा, इस तरीके की बातें करने लगे। और उसके बाद वो लोग बेसिकली धक्का मुक्की करने लगे। उसमें ही उन्होंने मुझे पेट पे मारा, मेरा फोन लेके इसको तोड़ दिया। इसमें बहुत सारे फुटेजेस थे जिसमें वो मारपीट कर रहे थे, इसीलिए वो लोग तोड़े। मेरे बाइक जो बाहर रखा हुआ था हॉस्टल का, उसको भी तोड़ दिया गया। वहाँ पर मेस के पीछे उन लोगों ने कोई हवन या पूजा रखा था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के उस छात्रावास के जो भी छात्र थे, जो भी स्टूडेंट्स थे, उनका ये मानना था कि आप कुछ भी करें, किसी का कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स यहाँ पर हर्ट नहीं होगा। लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि अगर हम यहाँ पर पूजा, एबीवीपी की तरफ जो लोग थे, उनका मानना था कि हम लोग यहाँ पर जब तक पूजा पाठ करेंगे या हवन करेंगे, इस मेस में नॉनवेज नहीं बन सकता है। उसी छात्रावास के कुछ छात्र ऐसे थे जिनका ये कहना था कि आप अपनी सारी चीजों को हमारे ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। फिलहाल सिचुएशन ये है कि वो लोग लगातार स्लोगनबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत में जो रहना होगा जय श्री राम कहना होगा, और लगातार छात्रों पे मतलब उनको प्रोवोक किया जा रहा है। उन लोग को मारने के लिए लोग परेशान कर रहे हैं। लगातार पत्थरबाजी पुलिस के सामने भी चल ही रही है लगातार। इसी कैंपस के कुछ उपद्रवी तत्व लेफ्ट और एनएसयूआई के समर्थन से ये लोग लगातार धमकियां देते आ रहे थे कि तुम्हारा पूजा नहीं होने देंगे, पूजा में बाधा डालेंगे। तो नहीं है, उसी मेस के प्रांगण में मेस के अंदर इफ्तार की पार्टी चल रही है, इफ्तार का रोजा तोड़ रहे हैं मुस्लिम छात्र, और जस्ट एक कदम की दूरी पर पूजा हो रही है। तो जब कावेरी रेसिडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे लेफ्ट और एनएसयूआई को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की जो इनकी पराकाष्ठा रही है, तो इनको इस सामाजिक सौहार्द बना रहे, इससे दिक्कत क्यों है। Well, let's go across to Sukirti now for more. And Sukirti, so, opposing sort of accounts of what actually happened yesterday at JNU, but there was violence. We've seen those visuals, and now a police case has been filed. Well, yes, Gargi, an FIR has been registered now. First, just to give our viewers a sense of the JNU campus today, at least at the main gate here, no protesters here right now, or no special security arrangements, because last night the atmosphere was such that protesters from both sides had gathered at the gates, and there were issues over who will be allowed entry. Media persons were not being allowed today also, while media is restricted outside the gate. But at least in terms of any protesters being present here, that is not being seen at this moment. So far, no protest scheduled inside the campus as of now, at least, because last night they did carry out a protest march until the Vasant Kunj police station, after which an FIR was registered against students associated with the ABVP. According to the police, another complaint is expected from the ABVP side as well against the JNUSU students. We're being told that anywhere between 16 to 20 students are injured in total. Nobody is in a serious situation or in danger, but yes, certain minor injuries have been suffered by students on both sides. The numbers being claimed from both ABVP as well as JNUSU, of course, are much higher. But as per the police records, anywhere between 16 to 20 students, many students going for their medical even now, because there are many who faced minor injuries, but a police case registered as of now. Now the question is, what are the college authorities going to do? What will the JNU Vice Chancellor do? Will there be any action
from the JNU administration as such, and will the police end up arresting anybody? Because the way this entire violence has unfolded has raised several questions on how one of the top universities of the country continues to see such violent incidents. In January 2020, over 30 students had been injured, including the JNUSU president Oishi Ghosh, who had faced very severe head injuries at that point of time. Attackers had come from outside, they were masked, they had carried out these brutal attacks with rods and other tools, and over 30 students as well as faculty members had been injured back then. But 2 years later, no arrests have been made so far. Last time it was outsiders. This time it is student groups within and inside the campus itself over issues of non-veg food as well as Ram Navami puja not being held. So violence continues to take place in JNU. But why does it continue to happen? Why the action is not taken, despite last time also there were several inquiries that had been put in place, but despite that no arrest till date. So violence continues, but lack of action remains. Will that change this time or not? That is what one will have to see.